we have already finished our submodule 1, which was on theory of flights. Now in this submodule, it will be a shorter one. I don't want to keep it a bigger one. I have seen a lot of people are not actually watching it because it's becoming a bit lengthy. But to be very honest, वो शुरू के जो syllabus है ना, वो actually those are the simple ones, okay, and like everybody knows about that. So for those, I really didn't want to make shorter videos. It is better to cover them up within 1 or 2 videos. इसलिए मैंने उसको बस वही 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया है. But now things will be becoming a bit more tougher as we go through one by one in all the submodules. So next submodule is based on aircraft structures, and these will be very general concepts that we are supposed to know regarding aircraft structure, without which you actually cannot neither can understand anything nor you can proceed forward towards studying module 11. So there will be this basic syllabus which is marked in this page. You can see I'm just reading out all these things one by one, and it will be easier for you to know. Over here also we have got 2.1 is a sub point A, then there is a sub point B. In sub point A we have airworthiness requirements. Airworthiness requirements means these are the requirements from the Dgca, from EASA, from FA, all the regularity bodies which govern aviation. Okay, these are their requirements. ये उन लोगों का requirements है, and so these aircraft requirements, airworthiness requirements for structural strength. Now, whatever the structure that we are building, whatever the structural analysis, whatever the manufacturers are doing, so is that capable enough to withstand the loads imposed during a flight? तो उसके ऊपर ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं. और एयरवर्थिनेस रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एंड देयर आर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस, then the primary structure, secondary structure, tertiary structure. Then we have got a fail-safe design. What is a safe life design? What are damage tolerances concepts? Then zonal station identification systems. Then stress, strain, bending, compression, shear, torsion, and hoop stress. So in this video I'll be only cover up till hoop stress, so I'm not just going deep into the syllabus. In this part B we have construction methods, like in what are the ways all these each and every member of a aircraft is actually designed. So for that we will have separate videos. In these videos I'll be just covering up till hoop stress, and the PDF will be available in the link. So let us just quickly go through all the points. In the very first point we have airworthiness requirements for structural strength. So airworthiness requirement क्या है और क्यों चाहिए हम लोगों को structural requirement strength के लिए? It's because aircraft airworthiness directorates, that is DGCA, FA, as I have already said, of the country of manufacturer, जो country से एक्चुअली मैन्युफैक्चरर एक आइटम को बना रहा है, वेदर इट मे नॉट बी एन एयरक्राफ्ट, एंटायर एयरक्राफ्ट, इट मे बी अ कंपोनेंट, इट मे बी अ एवियोनिक्स यूनिट, इट मे बी एनी स्ट्रक्चरल मेंबर, कुछ भी हो सकता है. ओके, व्हेन अ एयरक्राफ्ट इज बिल्ड, इट इज बिल्ड फ्रॉम various parts taken from various different manufacturers of different country. Okay, it is not like one country making everything. तो हर अलग अलग कंट्री का अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग एयरवर्थिनेस डायरेक्टरेट भी है. जैसे हमारे यहाँ पे वी हैव गॉट DGCA. In European countries you will find EASA. In Federal Aviation Association is available for American, and then you have got for Singapore there is different, for Dubai there is different, for some other part it's different. Okay, so they all have different things. So this design criteria for DGCA is in CAR 21, which is now a part of section 6. It was a part of section 2 airworthiness section, which even AME had to read, but right now we don't have that much of CAR 21 though, but it is there in the syllabus of module 10. Okay, it is there. We do have to study about CAR 21 because of this certain manufacturer requirements, but not all. So if you want to read and study in detail about the design aspects of the manufacturers and everything, that is in CAR 21. Now coming to the next point, where we can see that EASA part 25, okay, EASA part 25 of the European aviation actually gives us the certification standards. Means what are the standards in which they will be actually providing the certificate to some structure. Okay, कि structure airworthy है या नहीं, is it really fit to fly in aircraft, तो कितना एयरवर्दी है, कितना लोड उसके ऊपर आ सकता है, and all these things will be actually accounted, and then the certification standards will be made कि ये standards follow करने हैं हम लोगों को. ठीक है, so and those are made mainly you see for
weight above 5700 kg. So you cannot, those are not actually required. Any aircraft which is below the weight of 5700 kg, that will not be going through so many hardships when it is flying. Okay, so you don't require to actually meet all the standards so correctly, though it is definitely required, because those will also be carrying passengers and good items and valuable items. तो वहाँ भी चाहिए, लेकिन स्पेशली द 5700 kg के ऊपर जो होते हैं, those are normally the passenger carriers, and they are carrying more than 100, 200, around 300, 400 passengers. So they definitely require this certification standards to be met very mandatorily. And examples of structurally related topics in CS25, which is the certification standard 25, are those of the strength, the control and maintainability. कैसे कितना उसका strength होना चाहिए, क्या कंट्रोल, कैसे कंट्रोल होगा वो, और कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा. दैट इज द मेंटेनेंस पार्ट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पार्ट दे आर टॉकिंग अबाउट. अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक वेट कितना होना चाहिए, व्हाट इज द वेंटिलेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी. व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी? लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली रेशियो. ठीक है, ये एक रेशियो है कि एक आइटम के ऊपर कितना लोड मैक्सिमम आ सकता है, कितना लोड पे मैक्सिमम फ्रैक्चर हो सकता है, एंड व्हाट इज द actual load which is acting on that particular thing when it is working. Okay, let's say unit may fail at 200 when 200 pound of force is applied on it, or 200 kg of force is applied on it. So that is the maximum strength that it can have. बट हम लोग उसको 200 kg तक अगर उसके ऊपर लोड डाल देंगे तो वो फेल हो जाएगा डेफिनेटली. सो वी कैन नॉट पुट 200 kg, हमको उसको 100 kg या मे बी 50 kg, और मे बी 70 kg, और मे बी 150 kg तक मैक्सिमम उसको कर सकते हैं. सो ये जो रेशियो है, ये दो मैक्सिमम वेट का और जो एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस है उसका, एक्चुअल वर्किंग लोड है जितना हम लोग डाल सकते हैं सेफ लिमिट तक, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा ना, मे बी इफ इट इज़ 200 मैक्सिमम, देन वी आर ओनली पुशिंग इट टू 100. सो ये 200/100 का बन जाएगा 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा होगा बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स अ पैरामीटर टू डिसाइड लाइक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मैक्सिमम कितना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस which we can actually subject it to. ठीक है. Then there are event door operations. Okay, door operations are also a part of it, like how will the doors operate, and all these things are also part of all these things. Then we can see that in India, Dgca Car 21 is the standard provided for the manufacturing firms related to manufacturing of aircraft and its components. Whoever is manufacturing something, okay, so whoever is manufacturing something, whether it's a aircraft component or maybe the entire aircraft, in India we need to follow Car 21. Okay. Then we have got, there are certain supplemental structures which are also part of the aircraft and tends to separate manufacturing certification as per requirement, and special details of the primary load carrying members are also provided in these standards. Means these are the certain supplemental structures. Supplemental structures क्या होता है कि जैसे laboratory के अंदर कुछ हो गया, maybe some sort of maybe a water tap, a different type of a washing basin may be there, maybe a different type of a urination system may be there. Okay, you may have some sophisticated items somewhere placed in different aircraft that may be different. Okay, जो कि customized items होता है normally, those are supplemental items. ठीक है, और भी supplemental items हो सकता है जो वो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि एयरबस है या बोइंग है, उसने नहीं बनाया है, somebody else have, some other manufacturer must have made it, and then that has been incorporated into this aircraft. Okay, so those are actually called supplemental items, and those manufacturers are called as supplemental manufacturers. Okay, उन लोगों का भी एक type certificate होता है. They also get type certificate from the regulatory body of the country कहाँ जहाँ पे वो लोग बना रहे हैं. So they also need to meet a lot of things, like जैसे जहाज में नंबर प्लेट होता है. ओके, नंबर प्लेट वी ऑल नो दैट देयर इज अ नंबर प्लेट, देयर आर द हु इज द ओनर, व्हाट इज द एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर, व्हाट इज इट्स मेकिंग, हु इज द मैन्युफैक्चरर. ये एक नंबर प्लेट लगा रहता है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग. ओके, एंड वो नंबर प्लेट का जो मटेरियल होता है ना, दैट इज अ फायर प्रूफ मटेरियल. ओके, सो जस्ट लाइक दैट, so not every type of metal can be used over there. Okay, so that also comes up with a lot of standards. So ये होते हैं बेसिकली छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं व्हेन द एयरक्राफ्ट इज बिल्ड. सो वी शुड नॉट गेट इनटू टू डेप्थ ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट दैट वाज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया. नाउ मेनली द थिंग दैट वी शुड नो इज इन द सेकंड पार्ट व्हिच टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन.
So what is this structural classification? Is by three ways we can actually differentiate the structures. One is a primary structure, कि अगर उसका जो अगर वो टूट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया इन फ्लाइट, देन देयर मे बी लॉस ऑफ कंट्रोल, देयर मे बी कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल कोलैप्स, की टूट सकता है, जहाज गिर सकता है, ऑक्यूपेंट्स जो है, पैसेंजर जो, उन लोग को इंजरी हो सकता है, दे मे बी डेड, पावर यूनिट कुछ फेलियर हो सकता है, अनइंटेंशनल ऑपरेशन हो सकता है, मीन्स सम ऑपरेशन दैट द एयरक्राफ्ट पायलट मे नॉट हैव डन बट ऑटोमेटिकली हो चुका है. जैसे हम लोगों ने बोइंग 737 मैक्स का जो कहानी है, हम सब लोगों को पता होगा कि वो ऑटोमेटिकली उसका एलिवेटर सिस्टम में कुछ इशू था, तो इट यूज टू डिसेंड, मीन्स इट यूज टू गो अवे फ्रॉम द कंट्रोल, वट एवर द बेसिक्स दैट आई एम अवेयर ऑफ, कि the basic problem was like this only, that there was some pitching problem in the avionics system. It used to overshoot, मतलब जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा चला जाता था, that used to go away from the control of the pilot, और it used to descend. तो इसके बाद एक के बाद एक का क्रैश हुआ था, फिर उसके बाद उसको बैन किया गया था, फिर बाद में मॉडिफिकेशंस वगैरह होने के बाद देन DGCA have actually even few days back, even DGCA also allowed that aircraft to now fly. Okay. Just like many other regulatory bodies in the world, they have also allowed now. So then there are inability to operate a service. तो कोई सर्विस अगर नहीं ऑपरेट कर सकता है, तो all those structures which are so important कि if it fails even in the flight or maybe in the ground condition, वो ये सब खराबी ला सकता है, ये सब प्रॉब्लम कर सकता है जहाज में. Okay, so those structures are called the main or the primary structures. Then we have got secondary structures, जो अगर कुछ टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा तो that may not cause that huge risk. Okay, so like wing rib, अगर एक wing rib टूट गया अंदर से, so that's fine. I mean like अंदर का है तो that is not going to affect the structural integrity or safety of the structure so much. Okay, but definitely it's important, but it's not that important. Okay, then we have got fuselage stringers, the longitudinal members of the fuselage which are attached to stop the fuselage from bending. It is a load carrying members, these stringers are. We will come across all these things when we study in the next video. Then we have got the specified sections of the aircraft skin, कि certain skin structure होते हैं, जैसे fairing हो गया. Fairing क्या करता है? Fairing basically covers some area. Okay, it doesn't take any load. It only covers a particular area, and then what happens over there, so that minimum drag and all these things takes place. So it basically it's like a cover. Okay, just like cowling. Cowling it doesn't affect the safety of the aircraft. Like cowling अगर टूट के गिर भी जाएगा ना, so ऐसा नहीं है कि that will just entirely affect the operation of the aircraft. Okay, so these type of things are secondary, but though that is very important. Cowling is also a very important thing, but it is not so important that can actually cause the death of a person or maybe the entire accident of an aircraft sometimes. Now there are tertiary members or the third type of member which are not that important at all, like कोई फेयरिंग टूट गया, फिलेट टूट गया, वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट ब्रैकेट्स हैं, ये वो टूट जाते हैं, सो दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज दैट ह्यूज प्रॉब्लम. सो दोज आर टर्शियरी थिंग्स, द थर्ड थिंग्स. नाउ टूट तो कुछ भी जा सकता है, देयर मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मे फेल ऑन द एयरक्राफ्ट. सो in order to stop all these things, there are certain design philosophies which have come up in the market right now in today's world, where we can see that there are certain concepts there which are called damage tolerant concepts, कि अगर डैमेज हो भी जाता है, ठीक है, अगर डैमेज जहाज में कहीं पे जहाज में अगर डैमेज हो भी जाता है, देन ऑल्सो वी शुड हैव सम सर्टेन लेवल ऑफ सेफ्टी, कि अगर डैमेज हो भी गया उसके बाद भी जहाज उड़ सकता है. तो दैट टाइप ऑफ डिज़ाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ फेल सेफ डिज़ाइन. ओके, इट्स लाइक अ फेल सेफ डिज़ाइन, मीन्स अगर फेल हो भी जाएगा कुछ पार्ट, लेकिन फिर भी दूसरे जो पार्ट्स है ना वो उसका लोड शेयर कर लेगा, वो उसका काम आपस में शेयर कर लेंगे बाकी सारे पार्ट्स, एंड देन दे विल नॉट अलाउ द एयरक्राफ्ट टू एक्चुअली फेल. Okay, so in a failure which is not probable after fatigue failure or obvious partial failure of a single principal structural element, so it is designed so that the aircraft may continue to operate safely until the defect is detected in a scheduled maintenance check. Scheduled maintenance check जब तक नहीं आता, we all know scheduled maintenance checks are taking place about a year or maybe about 2 years or maybe 3 years or 5 years in some different aircrafts, different models, different schedule inspections. तो ये हर एक फेज इंस्पेक्शन होता है कि हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद, हर 10 साल बाद, 12 साल बाद आता रहता है. So in this type of things, दिस टाइप ऑफ शेड्यूल इंस्पेक्शन से पहले अगर वो पर्टिकुलर जगह को नहीं खोला जाता है, नहीं चेक किया जाता है, ठीक है, मेजर चेक्स में, सो दोज आर बेसिकली
called as the units which are required to actually function as the those units which are actually a part of schedule inspection. Even if those fail, but the entire aircraft's function will not fail. Okay, the entirety of the aircraft will be still consistent. Okay, so those are actually the fail-safe type of design, fail-safe type of structure, which is very important, and those are considered to be damage tolerant. Then we have got safe life thing. What is a safe life? Safe life is basically the structural elements are those which have a very low risk of unacceptable degradation or failure for a stated amount of time, also called as life limited parts or airworthiness limited items. Now what is life limited parts? सी ये बहुत टफ टर्म्स नहीं है. ऑल यू नीड टू नो इज बेसिकली है क्या. ठीक है, सेफ लाइफ इज व्हाट मीन्स कोई भी एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि वो 9000 साइकिल्स या 9000 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है. ये हम लोग उसको टेस्ट करके देखा है हम लोगों ने लैब में. तो अब मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया है कि ये मैक्सिमम 9000 फ्लाइट साइकिल पे फ्लाई कर सकता है, फ्लाइट साइकिल तक, या फिर मैक्सिमम 9000 लैंडिंग तक ये फ्लाई कर सकता है. उसके बाद ये टूटने का चांसेस है. कब टूटेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन चांसेस है ड्यू टू फैटिक फेलियर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. अंदर ही अंदर उसका क्रैक डेवलप हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. तो इन दोस केसेस व्हाट कैन हैपन, वी शुड नॉट एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट टिल 9000 hours or cycle or whatever. Rather we should even remove that particular thing even before that. Okay, कुछ 7000 में या 7500 में ही हम लोग उसको रिमूव कर देंगे. So उसके अकॉर्डिंगली टास्क्स बनाए जाते हैं जहाज के ऊपर काम करने के लिए. कोई भी शेड्यूल इंस्पेक्शन होता है, कुछ होता है, तो फिर ये जो पार्ट्स होते हैं ना, लाइफ लिमिटेड पार्ट्स, ओके, और द सेफ लाइफ पार्ट्स और एयरवर्दीनेस लिमिटेड आइटम्स, इसको एयरवर्दीनेस लिमिटेड आइटम्स भी बोला जाता है, ALI आइटम्स, और मे बी लाइफ लिमिटेड पार्ट्स LLP. तो ये लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं जो मैंडेटरीली चेंज करना पड़ता है, जो आप ठीक नहीं कर सकते, जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, उसको आपको पूरा रिप्लेस ही करना पड़ता है. यू नीड टू रिप्लेस इट ऑल टोटल. So these are the safe life type of design philosophy that they have incorporated. Then they have got damage tolerance. Now damage tolerance means that the structure have been evaluated to ensure that should serious fatigue, corrosion or accidental damage occur within the operational life of the aeroplane, the remaining structure can withstand reasonable loads without failure or excessive structural deformation until the damage is detected before a major inspection. As I have told you already, कोई भी major inspection आने से पहले if they find that there are certain structures, okay, which may fail even before a major schedule inspection which is coming up. If anything fails before that, still the entirety of the aircraft, the integrity of the aircraft and its structures will not fail. Okay. Now aircraft station and numbering. Aircraft station and numbering. What aircraft station and numbering is basically the very first thing that you should know before knowing what is aircraft stations or what are aircraft stations and what numbering is done on them. Is the very first thing that you should know is what is a datum. Okay, datum is basically a reference line. Okay, from where each and every measurement is taken. ये कोई भी reference line है, कि जैसे हम लोग अगर हम लोग का height कुछ चीज़ का height नापेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, we will take it from the floor, right? फ्लोर से हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे कि कितना हाइट है. सो फ्लोर इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अस कि फ्लोर 0 पे है. ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट कोई भी एक डेटम हम लोग की कोई भी एक पॉइंट को मान लेंगे, इमेजिनरी लाइन को या प्लेन को. वो हो सकता है कि एयरक्राफ्ट का नोज हो सकता है इन सम केसेस वो हो सकता है कि नोज से पीछे है थोड़ा, कॉकपिट के वहाँ पे दिया गया है. ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे ओवर हियर इन द पिक्चर यू कैन सी over here they have got the datum, that black horizontal vertical line which you can see is the datum. Okay, so उससे पहले जो भी है वो that is counted in negative number or in minus, and उसके पीछे जो भी है that is counted in positive number or positive R. Okay, so ये basically actually यूज़ क्यों किया जाता है, because if you have to know कि कोई भी एक स्टेशन पे, जैसे इस पिक्चर में देखिए कि if you want to know कि प्रोपेलर कहाँ फिटेड है एयरक्राफ्ट में, प्रोपेलर का क्या स्टेशन है, या ये एंटेना जो ऊपर दिख रहा है फ्यूजलेज के ऊपर उसका क्या स्टेशन है, या फिर हॉरिजॉन्टल स्टैब कहाँ पे है, विंग का CG कहाँ पे है, पीछे का लैंडिंग गियर जो है मेन लैंडिंग गियर वो कहाँ पे है, नोज लैंडिंग गियर कहाँ पे है. इफ़ यू रियली वांट टू नो अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द एयरक्राफ्ट, सो देयर शुड बी अ मार्किंग, देयर शुड बी सम लोकेशन. ओके, सो वो डिस्टेंस क्या है वो हम लोग उस डेटम से लेते हैं. और किस में लेते हैं हम, वो इंचेस में लेते हैं. ओके, any point on the aircraft is marked with a station number which is the distance measured from the datum in inches to that particular point. ठीक है, अगर सामने हो गया
डेटम के सामने हो गया तो दैट विल बी इन नेगेटिव नंबर, अगर डेटम के पीछे हो गया दैट विल बी इन पॉजिटिव नंबर. ओके, मीन्स लेफ्ट ऑफ डेटम इट विल बी ऑल नेगेटिव, right of datum it will be all positive, and on datum it will be 0. Okay, it may be normally taken from the nose of the aircraft or at a certain part, and okay, if you go through these particular points you will come across. और ये लैटरल भी हो सकता है, मीन्स हम लोग ये ऐसा नहीं कि बस फ्यूजलाज का स्टेशन हो सकता है, हम लोग ये विंग में भी ले सकते हैं. अगर पर्टिकुलर विंग रीव है, कोई एक पर्टिकुलर विंग का हम लोग अगर स्टेशन जानना चाहते हैं, या हॉरिजॉन्टल स्टैब में, या वर्टिकल मे बी एलेरॉन का स्टेशन क्या है, और रडर एलिवेटर का क्या स्टेशन है, विंगलेट कहाँ पे फिक्स्ड है. इफ़ यू वांट टू नो ऑल दिस डिस्टेंसेस देन दोज डिस्टेंसेस विल नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नोज, right? Those will be calculated from the center line of the aircraft. Okay, from the center line of the aircraft those will be taken. So at that time the center line is what, the line that is passing from the nose to the tail portion through the longitudinal axis. तो उससे हम लोग लेफ्ट में लेंगे, लेफ्ट विंग के जो भी डिस्टेंसेस है वी विल कैलकुलेट ऑल दोस थिंग्स, एंड ऑन द राइट विल बी टेकिंग द राइट डिस्टेंसेस. ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेशंस वी हैव लाइक दिस, वी हैव गॉट फ्यूजलाज स्टेशंस, ओके, और body stations which are also called as, and those are all the longitudinal distances. You can see over here they have given all the longitudinal distances from a particular datum. क्या क्या है अलग अलग जगह पे ये जो दाग लगाया हुआ है, ये these are all अलग अलग stations, and you can see the numbers placed on them. Those numbers are basically the distance in inches from the datum. Okay, कि कितने डिस्टेंस पे पर्टिकुलर स्टेशन है. तो ये लोग एक मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए या इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो द पर्टिकुलर फ्यूजलाज स्टेशन, कि आप लोगों को कहाँ जाके काम करना है, क्योंकि टास्क कार्ड्स में, एएमएम टास्क कार्ड्स में ये दिया रहता है. सो अनलेस यू नो कि कौन से स्टेशन में जाना है, कहाँ जाके काम करना है, यू कैन नॉट एक्चुअली फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर इज विंग स्टेशन. विंग स्टेशन इज ऑल्सो लाइक विंग में कौन सा डिस्टेंस है, कौन से रिब है, कौन सा सेक्शन है. सो दोज आर कॉल्ड द बटक लाइन. तो विंग का जो भी डिस्टेंसेज रहता है वो बटक लाइन बोला जाता है और बट लाइन बोला जाता है. देन हम लोग ऐसे स्टेशन की लैंडिंग गियर कितने हाइट पे है, ग्राउंड से ऊपर का जो एंटेना है, अपर एंटेना वो कितना है, बॉटम का एंटेना कितना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द, लाइक इन एयरबस द हाइट ऑफ द लैंडिंग गियर इज टू हाई, okay, in Airbus, but that is not the case in Boeing. Those who are working or those who have got training on Airbus and Boeing, they will be knowing. Okay, so उसका हाइट कितना है, लैंडिंग गियर कितना ऊंचे पे है सरफेस से, तो वहाँ पे सरफेस विल बिकम द वाटर लाइन. और उस वाटर लाइन से यू कैन सी दे हैव गिवन द वाटर लाइन. वहाँ से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे ना, सो दैट विल बी अगेन कैलकुलेटेड इन इंचेस. तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सेक्शंस, जो भी है वर्टिकल स्टेशंस होगा, और वो वाटर लाइन बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ. देन देयर आर अदर सेक्शंस ऑल्सो, कि हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाइजर पे कोई स्टेशन लेना चाहते हैं, वर्टिकल स्टेबिलाइजर पे वी वांट टू टेक सम स्टेशन, और मे बी इन पावर प्लांट स्टेशंस ऑल्सो. पावर प्लांट स्टेशंस में जैसे इन इंजन, इफ यू वांट टू नो अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एन इंजन, कि कितने सेक्शन पे, कितने स्टेशन पे एक इंजन का हम लोग कोई एक कंपोनेंट फिटेड है क्या नहीं है. सो दोज विल बी कॉल्ड एज पावर प्लांट स्टेशंस. एंड देयर मे बी फ्लैप स्टेशंस ऑल्सो लाइक दिस, एंड सम अदर स्टेशंस एज वेल. So those about all stations now. Now there are zones, certain zones in the aircraft to distribute the aircraft into different zones. It is easier for anything to be located, and it is easier to actually replace any particular part and component. And each and every zone is marked with a different number. And let me just quickly go through these things. Okay, normally the left and the right side will be marked as L and R. So you can see from the bottom side, if I start, where is zone number 1? Just quickly let me locate. Okay, this is zone number 1. You can see this is zone number 1. Okay, the lower half of the fuselage. Okay, that is the zone number 1. Then you have got zone number 2, which is the upper half of the fuselage. Then there is zone number 3 over here, the empennage section. Okay, the empennage section, and there is also the which is including the horizontal stabilizer, the vertical stabilizer, and everything. Then you have got zone number 400, which is the engine nacelles. All the engine nacelles will be considered as zone number 400. Then there is zone number 500, which is the left wing, and zone number 600, which is the right wing. And you have got zone number 700, which is landing gear. All the landing gear falls and the landing gear doors and everything will come under the zone 700. And there is some other zone. Yes, there is zone 800. Okay, that is doors. Okay, all the doors, like in Airbus there are minimum 4 doors,
if you don't I mean if you consider Airbus 319, if you talk about Airbus 321, then you have got more than 4 doors actually. Okay. And but those are not actually used in that way, because that's mainly used for emergency purposes, the middle ones. Normally 4 doors are used. Okay. So these are the zoning things we have come across. Now we will quickly go through the stresses that are developed in the aircraft. So whenever a mechanical or component is working, be it a small maybe a nail or a bolt and nut, starting from that to a huge aircraft or maybe ship or anything, that will definitely have some stresses acting on them. Okay. What is a stress? First of all, stress is basically the resistive force which is acting inside the body, means if somebody is trying to push you or trying to squeeze you, so your body from the inside is trying to actually resist those stresses, resist those external deformation कि जो आपके बॉडी के ऊपर जो लोड हो रहा है, ठीक है, वो आप अंदर से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस. सो स्ट्रेस जो है हम लोगों को लगता है कि हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से नहीं कर रहे, बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी टू फाइट आउट दो स्ट्रेसेस. बाहर से जो भी लोड इम्पोज किया जा रहा है, उस लोड के अगेंस्ट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस. ओके. सो दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन हम लोग को उसको वैसे नहीं समझना है, हम लोग को उसको इस तरीके से समझना है कि इट इज समथिंग दैट इज एक्टिंग फ्रॉम विद इन, जो द बॉडी के अंदर में है. तो ये कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं? जैसे टेंशन. टेंशन क्या है कि जहाज में जब 2 फोर्स एक्ट होते हैं, हम लोग को पता है कि 1 फोर्स एक्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द थ्रस्ट. पीछे की तरफ एक्ट होता है जो ड्रैग फोर्स है. सो ये 2 फोर्स जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे एक्ट करेंगे, सो नाउ यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग. इट इज बेसिकली पुलिंग द एयरक्राफ्ट. सो दैट इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग. okay, that is actually stretching the aircraft. So that is called as the tension force, okay, or the pull force. Then you have got compression. What is a compression force? Compression force is basically the forces that are imposed on any structure which actually compresses it, okay, which actually pressurizes it. Okay, so that is called as compression force. So by the name we can understand. So there is some compression, there is some pressure acting. So it's like a push force. So like the landing loads on the gears, whenever a aircraft lands, so whatever the forces that are acting on the landing gears are called compressive forces. Then there are bending force, which is a combination of the tension as well as compression. In the diagram you can see, this is the bending force. So the top surface is suffering from tension. Sorry, the picture is not that clear. Anyway, if you bend any scale or anything, you will understand that the top surface suffers from tension, it will stretch, and the bottom surface will suffer from compression. Okay, the bottom surface will actually make wrinkles, और वो स्क्वीज होने की कोशिश करेगा, और ऊपर का जो सरफेस है वो स्ट्रेच होने की कोशिश करेगा. सो टेंशन प्लस कॉम्प्रेशन मेक्स बेंडिंग. ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन फोर्स. सो लाइक लिफ्टिंग लोड्स ऑन द विंग. सो व्हेनेवर अ विंग गेट्स लिफ्टेड, तो नीचे से बहुत हाई प्रेशर एक्ट होता है, ऊपर से लो प्रेशर एक्ट होता है. सो द विंग, यू विल फाइंड द विंग विल बेंड स्लोली. ओके, यू विल फाइंड द विंग विल स्लोली बेंड. तो जो डाइहेड्रल बेसिकली दिया जाता है, वो उसी को असिस्ट करने के लिए दिया जाता है. और जो फ्लेक्सचर विंग का अभी जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि विंग फ्लेक्स हो सकता है, सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न बिहाइंड दिस, कि अगर वो बेंडिंग लोड अगर उसके ऊपर उतना पड़ता है तो टूटने का चांसेस है, बहुत कुछ है, एफिशिएंट भी नहीं होता है. सो स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड घटाने के लिए भी वो फ्लेक्सचर विंग का कॉन्सेप्ट आ गया अभी. ओके, देन वी हैव गॉट अ ट्विस्टिंग और टॉर्शन विच इज़ कॉल्ड लाइक यू कैन सी ओवर हियर इन दिस डायरेक्शन. कुछ चीज़ को हम लोग ऐसे अगर ट्विस्ट करेंगे, जैसे मतलब कपड़े को हम लोग निचोड़ते हैं भिगोने के बाद, है ना, पानी निकालने के लिए. सो दैट इज अ ट्विस्टिंग फोर्स. तो ये कब एक्ट करता है? जैसे फ्यूजलाज में जैसे ही हम लोग अगर सडनली हम लोगों ने रोल कर लिया, तो क्या होगा, फ्यूजलाज जो है वो तो स्ट्रेट ही है, लेकिन एज इमीडिएटली इफ वी रोल ऑन द राइट साइड और मे बी ऑन द लेफ्ट साइड, तो वो जो विंग है ना वो घूम जाएगा. बट वो जो फ्यूजलाज का जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे जो फ्यूजलाज है, वो उतना जल्दी उसके साथ घूम नहीं पाता है. तो घूम तो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि देयर विल बी, इफ़ यू क्लियरली थिंक अबाउट इट, केयरफुली थिंक अबाउट इट, जहाँ पे विंग एक्चुअली फिटेड है फ्यूजलाज के साथ, विंग तो घूम गया, लेकिन उस जगह पे एक टॉर्शन भी क्रिएट हुआ है, ट्विस्टिंग भी क्रिएट हुआ, कि फ्यूजलाज घूमने की कोशिश कर रहा है लेकिन घूम नहीं पा रहा है. अल्टीमेटली घूम जाता है, दैट इज ट्रू, बट it is still suffering some sort of a twisting action, okay, when the aircraft suddenly rotates. Okay, then we have got a shear force. Shear is basically the relative movement, कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर जब मूव करता है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, shearing stresses acts.
So whenever air molecules will pass over the surface of any structure, कोई भी एक structure के ऊपर अगर air molecules pass करेगा as the aircraft is flowing with very high speed, so at that time you will find that shear forces will be acting on them. तो ये ग्राउंड में भी हो सकता है, जैसे व्हील विल बी रोलिंग, व्हेन व्हील विल बी रोलिंग ऑन ग्राउंड, तो जो टायर्स हैं और जो लैंडिंग रनवे है तो उसके ऊपर बेसिकली उन दोनों में shear force एक्ट करेंगे. ओके, एंड द लास्ट थिंग ऑन दिस वीडियो इज द हुप स्ट्रेस और द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस. सो दिस स्ट्रेस इज बेसिकली डेवलप्ड ऑन द फ्यूजलाज कार्वेचर, क्योंकि फ्यूजलाज अंदर से हम लोग को पता है कि प्रेशराइज्ड केबिन है ना, तो अंदर से एयर प्रेशर रहता है फ्यूजलाज के ऊपर. तो इट इज एग्जैक्टली एक्टिंग लाइक अ सिलेंडर और मे बी अ बलून. ठीक है, अंदर से प्रेशर है और बाहर प्रेशर कम है, तो नेचुरल टेंडेंसी क्या रहेगा कि बर्स्ट आउट करने का, इट विल ट्राई टू बल्ज आउट एंड बर्स्ट आउट, है ना. सो वो फोर्सेस कहाँ एक्ट करेगा, यू कैन सी इन दिस डायरेक्शन, इट विल बी एक्टिंग ऑन द कर्वेचर, उसके चारों साइड पे सिलेंडर का जो चारों साइड है उसके ऊपर एक्ट करेगा. सो इफ़ यू कंसिडर आवर एयरक्राफ्ट एज अ सिलेंडर, a pressurized vessel, so the forces which will be acting on the circumferentially on the surface of the fuselage, so those will be called as hoop stresses. So hoop stresses basically क्या होता है, hoop एक होता है जो longitudinal और axial stress, जो आपको इस एरो से दिखाया गया है कि दोनों एंडेड एरो है, दो साइड पे है कि पीछे की तरफ, नोज की तरफ और टेल की तरफ जो एक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हुप स्ट्रेस, जो मैक्सिमम होता है. एंड द टेंडेंसी ऑफ हुप स्ट्रेस इज बेसिकली टू एक्चुअली क्रैक द surface of the fuselage and break it. Okay, so metal fatigue is the okay, and the final thing is metal fatigue. Now what is the metal fatigue? Basically कोई भी एक चीज़ को हम लोग continuously bend करेंगे ना, तो we will not be requiring that high load to break it. Okay, कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे एक वेयर है, अगर वेयर को हम लोग स्ट्रेच करेंगे, कैन वी टीयर इट ऑफ? नो, वी कैन नॉट. अगर हम लोग उसको काटने की कोशिश करेंगे हमने हाथों से, कैन वी कट इट? नो. सो दैट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो उसको अगर हम लोग को तोड़ना है ना, सो द ईजिएस्ट वे इफ़ यू नो इज़ टू बेंड इट कंटिन्यूसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ऑपोजिट डायरेक्शन एक बार सामने की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, अगर उसको कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते रहोगे ना, अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक ही जगह पे करना है उसको, ट्विस्ट करते रहोगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ना उसका मेटल जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा. मेटल विल बी डिसलोकेटिंग एंड इट विल बिकम वीक इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन. तो विथ मिनिमम फोर्स यू कैन ब्रेक दैट पर्टिकुलर थिंग. कोई भी अगर वायर को हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो हम लोग कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते हैं उसको अबाउट वन पॉइंट. सो दैट इज कॉल्ड फैटिक. तो वो फैटिक फेलियर होता है मेटल में, क्योंकि साइक्लिक लोडिंग और अनलोडिंग हो रहा है एक ही जगह पे. सो द स्ट्रक्चरल मेंबर्स विच कॉजेज देम टू फेल वेल बिलो देयर अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ओके, अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका कुछ भी हो सकता है. इतना हो सकता है कि हम लोग उसको काट भी नहीं पाएंगे, उसको खींच भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं. इवन उसके उतना अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचना ही नहीं है, उससे पहले हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं जस्ट बाय द हेल्प ऑफ दिस मेटल फैटिक कंसेप्ट. ओके, तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग एक वायर को इतना इजीली तोड़ सकते हैं, तो कोई भी चीज़ एक्चुअली ऐसा टूट सकता है. दैट इज द रीजन दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन कि इफ़ यू अप्लाई अ लॉट ऑफ लाइक जस्ट देयर आर कोटर पिन. हो, कोटर पिन, लॉट ऑफ पीपल विल बी अवेयर ऑफ इट. कोटर पिन एक स्प्लिट पिन भी कहा जा सकता है. उसको बोल्ट के अंदर घुसाने के बाद हम लोग उसका दो जो एंड है उसको ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो बार बार ना यूज़ नहीं कर पाते. एज पर मैन्युफैक्चरर टास्क कार्ड्स, द पीपल हु आर वर्किंग दे विल बी नोइंग कि आप एक बार कोटर पिन को खोल दोगे तो नया पिन लगाना पड़ता है. यू कैन नॉट यूज़ इट कंटिन्यूसली द सेम पिन, क्योंकि बार बार हम लोग उसको एक बार सीधा करेंगे, उसको अंदर घुसाएंगे, फिर उसको ट्विस्ट कर देंगे, फिर उसको सीधा करेंगे, अंदर घुसाएंगे, ट्विस्ट कर देंगे. तो ये बार बार यही कंसेप्ट अगर चलता रहेगा, सो ड्यू टू फैटिक दोज पिन्स विल सम ऑफ द अदर टाइम इट विल फेल, है ना. तो उसका जो फंक्शन है लॉक का जो नट है उसको लॉक करने का, वो फंक्शन टोटली बेकार हो जाएगा. इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन कंसेप्ट, है ना. सो दैट द रीजन this metal fatigue is something that is very important. So with this I'll just end this particular video. I don't think it's too long anyway, and just wait for the rest of the part of this sub module 2 to come up. Okay, and just keep sharing, keep revising, and let me know if you have any doubt. Thank you.